Battle clash explodes. AAP, BJP, Congress, top guns file nomination. 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है. Friends turned foes, split India. जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की. Rahul versus Kejriwal fight erupts. बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया. Who has the edge in Delhi dangle? Top focus on India Today. 20 days to go for the big election in Delhi. Today was a big nominations day in the national capital, right ahead of polling day on January the 5th. All the top guns, February the 5th, I beg your pardon, all the top guns, including Arvind Kejriwal, Parvesh Verma of the BJP, Manish Sisodia of the Aam Aadmi Party, Ramesh Biduri filed their nominations for the Battle of Delhi. The rivals visited temples to seek divine blessings before the finale. We tell you more in this report. Big day today. Battle for Delhi enters decisive phase. It was a bumper nominations day in the national capital. All the top guns in Delhi are in war mode. Ahead of filing nominations, the New Delhi warriors Arvind Kejriwal and Parvesh Verma, who are up against each other, visited the Valmiki temple to seek divine intervention. The rivals also held road shows before filing nominations. Upping the ante, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal asked Delhiites to vote for development. मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा. हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है. हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो काम के लिए वोट दीजिए. शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए. The BJP, on the other hand, is confident of victory with a mission to make Delhi आपदा free. ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी. दिल्ली मोदी जी के बगैर अधूरी है, इसीलिए जो ये आपदा ने दिल्ली को 10 साल से घेरा हुआ है, आपदा से मुक्ति के लिए, दिल्ली आपदा से मुक्त हो, उसके लिए हवन पूजन हुआ है. सभी माँ भगवती की कृपा से सभी कालका क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आशीर्वाद लेकर और दिल्ली को आपदा से भगाना है. The Delhi election is a battle for survival for Kejriwal, whose national ambitions have not taken off so far. For the BJP, which has suffered 2 back-to-back drubbing, it is a prestige battle. With Amit Bharadwaj, Bureau Report, India Today. They were supposed to be partners under the India Alliance, but you'd never guess it if you saw how they're talking to each other right now. But the Aam Aadmi Party and the Congress are now pretty much ringing the death knell of the India Bloc Alliance. As Mamata Banerjee's Trinamool Congress and Akhilesh Yadav's Samajwadi Party openly pledged their support to Arvind Kejriwal in the Delhi Assembly election. The Congress on Wednesday posted a disclaimer to its allies saying the Congress party has made so many sacrifices on so many things for the India bloc. So it's become a bit of a free-for-all within this opposition alliance. This after Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and the Trinamool backed the Aam Aadmi Party over the Congress in Delhi,
signaling a possible rift. Meanwhile, the Congress's ace campaigner Rahul Gandhi's entry into battleground Delhi has not only changed the political dynamics of Delhi's poll battle. Taking a dig at the Aam Aadmi Party Supremo directly, Rahul said Kejriwal promised to make Delhi like Paris while highlighting a garbage site in Delhi's Rithala. इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनने समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। আমরা যখন ইন্ডিয়া জোট তৈরি করেছিলাম, যখন ইন্ডিয়া জোট হয়েছিল, তখন একটা সিদ্ধান্ত সবাই সমর্থন করেছিল যে যেখানে শক্তিশালী তাকে সেখানে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তার সাথে দাঁড়ানো উচিত। যেমন বাংলায় তৃণমূলের ক্ষমতা রয়েছে, তৃণমূলের সাথে কংগ্রেসের, সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, মানে ইন্ডিয়া জোটের শরিক যারা ছিল, তারপর শরদ পাওয়ারের এনসিপি, তারপর আরজেডি, জেএমএম, ডিএমকে সবাই দাঁড়াবে। তা আপনি কি মনে করেন যে দিল্লিতে কার ক্ষমতা? দিল্লিতে বিজেপিকে পরাজিত কে করতে পারে? আম আদমি পার্টি করতে পারে না কংগ্রেস করতে পারে? আম আদমি পার্টি করতে পারে। তো বিজেপিকে হারানো আমার উদ্দেশ্য যদি হয়, বিজেপিকে পরাজিত করা যদি লক্ষ্য আমার হয়, তাহলে আমি বিজেপির বিরুদ্ধে যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লড়ছে তাকে দুর্বল করব কেন? We are respecting the sentiments of all Indian alliance parties, but they should also to be understand that Indian National Congress is sacrificing so many things for the India alliance. Now we are also fighting as a political party in Delhi. Our fight is very clear, strong, that you people will know about the after the results, where the Congress party stand is there. And Mosmi Singh, who tracks all these developments within the India Alliance and beyond, is with me live. Mosmi, this is, it looks like the Congress has opened up the emotional atyachar within the India Alliance now, saying, we have sacrificed so much for the alliance. What exactly are they trying to say? What are they hoping to achieve right now, with all the allies kind of flocking behind the Aam Aadmi Party? So clearly, the Congress anticipates that this could have a spiraling effect in Maharashtra or perhaps Tamil Nadu or perhaps Jharkhand, where, Akhilesh Yadav hit the nail on the head as far as the tussle is concerned, talking about regional satraps, the regional parties being given preferences when you're talking about assembly polls. Now that is the basic, perhaps you can say, point of contention, because Congress doesn't really feel that leeway needs to be given to the regional satraps. And now that realization has dawned on the Congress, Shiv, that it is time that you need to reclaim your territory, because all these allies have come at the cost of you. So it is perhaps choosing the bigger enemy at different points of time in the Lok Sabha, and now when it's assembly elections are on the cards, you're choosing the enemy where you can actually see a revival of your party and have some hope for a better contest. I'm just curious, Mosmi, because, ally management, etc., used to be one of Sonia Gandhi's strong cards. Is her view not being taken in how to sort out this India Alliance mess?
I don't really think that Sonia Gandhi has much to say or intervene in this one because we've seen that alliance management was left to Mr. Kharge's office, to the Congress president, and then later to Rahul Gandhi and his office. And you know, Priyanka Gandhi acted as the chief troubleshooter. All I can tell you is that in the Lok Sabha elections, the Congress was more giving. It was ready to bend backwards. Rahul Gandhi also said that we are ready to bend backwards even if it comes at the cost of us. But now the dynamics have changed. Assembly elections, the Congress feels that it has to revive its territory, its soil, and that's why that will come at the cost of the alliance. Well, it's a pity to see what's going on because the country does need a strong opposition and it only looks like the biggest alliance here is just frittering away whatever little mandate it had received in the Lok Sabha election. We'll have to see how this actually plays out. Thanks very much for that live input from Mosmi Singh.